Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the conversion of galvanometer into ammeter. Conversion of galvanometer into ammeter. So we have already discussed the galvanometer and it is current and voltage sensitivity. Now the topic is how we can convert it into ammeter and voltmeter. So now here the question is, what is the need to convert a galvanometer into ammeter? So galvanometer is a device which can be used to measure or detect very small currents. हम जानते हैं कि galvanometer वो डिवाइस है जो मेजर या डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है फॉर वेरी स्मॉल करंट. सो अगर हम गैल्वेनोमीटर के रेंज के बारे में बात करेंगे कि ये इसका जो रेंज ऑफ करंट या मेजरमेंट होता है वो होता है दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, दैट्स ऑफ ऑर्डर 10 to the power -6 एम्पियर, या होता है इसका ऑर्डर मिली एम्पियर. It means 10 to the power -3 एम्पियर, 10 to the power -3 एम्पियर. तो ये बहुत छोटी करंट्स को मेजर या डिटेक्ट कर सकता है. तो जो डोमेस्टिक करंट्स हैं इनको मेजर करने के लिए हमें इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ता है एमीटर में, या वोल्टेज मेजरमेंट के लिए इसको वोल्टमीटर में मेजर इसके बाद आएगा. अब how to convert the galvanometer into ammeter and what is ammeter? Ammeter is a device which is used to measure the current. Ammeter a device which is used to measure the current is called an ammeter. So but galvanometer is converted into ammeter. We have a galvanometer, we can convert it into ammeter. So how it can be converted into ammeter? Let us suppose we have a galvanometer of resistance G. This is the resistance of galvanometer coil. ठीक है. अब इसको हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है. तो इसको हम एमीटर में बड़ा इजी है. इसको हम पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम शंट कहते हैं. जब हम इस गैल्वेनोमीटर को एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं जिसको हम शंट कहते हैं. सो by connecting this low resistance shunt parallel to the galvanometer, we can convert this galvanometer into ammeter. अब बात क्वेश्चन ये है कि अभी पहले तो ये गैल्वेनोमीटर ये तो सिर्फ माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर करंट ही मेजर करता था. अब इस शंट के कनेक्ट करने से ये कैसे एम्पियर्स के करंट भी मेजर कर सकता है, अप टू 5 और 10 एम्पियर्स भी मेजर कर सकता है. तो कैसे? Now the question is how. Let us suppose we have a current of we want to detect the current of 1 ampere. We want to detect the current of 1 ampere, and you know 1 ampere is equal to 10 raised to power 3 milliamperes. ठीक है. अब इसका मतलब है 1 ampere is equal to 1000 milliamperes. तो जब ये 1000 मिली एम्पियर्स यहाँ पहुंच जाते हैं तो यहाँ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इसमें सिर्फ Ig जाएगी. व्हाट्स Ig? इट इज द करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हिच गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन. ये वो करंट है जिस पर गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है. और रेस्ट ऑफ द करंट दैट विल पास थ्रू द शंट, I minus Ig will pass through the shunt. You can write it IS. That's shunt current, that's I minus Ig, and this is Ig. So Ig, let us suppose this has full scale deflection on 10 milliampere. 10 milliampere. ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर की, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस होता है इसमें जीरो स्केल यहाँ पर होती है. तो यहाँ पर 10 मिलीएम्पियर की करंट मान लो यहाँ तक जाती है 10 एम्पियर की करंट.
तो यहाँ पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है ऑन द करंट ऑफ when current of 10 milliampere flows through it. So लेकिन हमें यहाँ मेजर करना है 1 एम्पियर दैट इज 1000 मिलीएम्पियर. इसमें से क्या होगा, इसमें से सिर्फ IG इज इक्वल 10 मिलीएम्पियर जाएंगे, गैल्वानोमीटर में से जाएंगे सिर्फ 10 मिलीएम्पियर, और रेस्ट ऑफ द करंट जो 1000 milliampere minus 10, that's 9990 milliampere, that will pass through the shunt. So यहाँ पर शंट में 990 milliampere गए और 10 milliampere गए गलवान, और यहाँ पर फिर ये मिल जाएंगे और इस में फिर से जाएंगे करंट ऑफ 1 एम्पियर. तो यहाँ पर हमें देखना है कि 10, this is full scale deflection. So and this is the current corresponding to which this ammeter will show the full scale deflection here at 1 ampere. अब इसे कम करंट अगर हमें मेजर करनी हो तो let us suppose we have 500 milliampere. 500 milliampere हमें मेजर करना है, उसमें से सिर्फ इसमें 5 milliampere जाएगा और rest of the current will pass through, that's 495 milliampere will pass through the shunt. So here the ratio of IS divided by IG, that always remains constant. IS divided by IG. This can be proved later. We can prove this that IS divided by IG always remains constant. जितनी भी करंट जाए हमें मेजर करनी हो वो इस हिसाब से जाते हैं कि IS divided by IG कांस्टेंट रहता है. तो इस तरह ये नहीं कि इसमें हर टाइम पर 10 मिलीएम्पियर जाएगी और रेस्ट ऑफ द करंट यहाँ पर, ये इस प्रोपोर्शन से हमें कितनी करंट मेजर करनी उसी हिसाब से करंट की डिवीजन होगी, जैसे IS divided by IG remains constant. So this is how the galvan, how the ammeter works, and how can, so in simple words we can say if you are supposed to discuss this question in the examination, so you can say that in order to convert a galvanometer into ammeter, we connect a low resistance, very low resistance, that's called shunt parallel to the galvanometer, or we can say a galvanometer can be converted into ammeter by connecting a low resistance shunt parallel to it. So now what we have, if you are supposed to find the, अगर आपको कहा जाएगा कि ये जो resistance of shunt है, derive it, what is the resistance, on what factors it depends, derive the expression for the resistance, and how much resistance is connected and in parallel to the galvanometer to convert it ammeter. So let us suppose we have to derive the resistance of shunt. So let us suppose we have a galvanometer of resistance G. इसकी resistance G है. G is the resistance of galvanometer. So we connect a low resistance shunt parallel to it, and this is the resistance of shunt. So let us suppose we have to measure the current I. Total current in the circuit is I. So the total current in the circuit is I, and you know here according to Kirchhoff's first law, so IG will flow through this is the current corresponding to which galvanometer shows full scale deflection, and rest of the current जो बच जाएगी I minus IG, that will pass through the shunt. Very good. And now and here they will meet, it will again make the current I, because IG minus IG, I minus IG plus IG cancel and this one. So now we know we have to derive the resistance of shunt. We know that galvanometer and shunt, they are in parallel. Since galvanometer and shunt are connected in parallel. So जब ये पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं तो इसे क्या होगा, because we know पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है, so here Vs will be equal to Vg, therefore Vs will be equal to Vg. Now Vs here is, that is we know according to Ohm's law V is equal to IR. अब Vs की बारी आ गई तो Vs इसकी रेजिस्टेंस, इसकी करंट है I minus Ig और रेजिस्टेंस है S is equal to इसमें करंट IG और रेजिस्टेंस है G. तो हमें what we have to determine S. So this relation here
this relation you have to remember, because when you have to calculate the numericals on this, so you have to use here this relation. Or if you are supposed to find the resistance S, resistance of shunt, then S is equal to IgG divided by I minus Ig. This is the required resistance of shunt, which must be connected in parallel to the galvanometer to convert it into ammeter. So this required resistance must be connected here. And इससे पहले मैंने कहा था कि Ig divided by Is. We know Ig minus Ig minus I. That's I minus Ig is equal to Is. That this is the current passing through the shunt. So instead you can write here Is. So you can write here Ig divided by Is into G is equal to S, or Ig divided by Is is equal to S divided by G. So it means that the ratio of galvanometer and shunt current, that's shunt की resistance, तो अब हमें that's constant. अब जो जब हमने connect किया है shunt, तो इसकी resistance अब change नहीं होगी. अब galvanometer की तो already constant resistance है, तो this is constant. So Ig divided by Is is equal to constant. जो मैंने पहले कहा था कि जब भी हम किसी एमीटर में करंट डालते हैं तो वो ऐसी फ्लो होती है कि इन दो पार्ट्स में शॉर्ट या गलवन, जैसे कि Ig divided by Is minus constant. तो this was about how we can convert the galvanometer into ammeter. Now इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है. अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल एक आपको कहा गया है एक galvanometer है आपके, if you have a galvanometer of resistance 10 ohm, a galvanometer of resistance 10 ohm show the full scale deflection at current of 5 ampere, shows full scale deflection at current of 5 milliampere. That's Ig is the current corresponding to which the galvanometer shows full scale deflection, and just 10 ohm is the resistance of galvanometer, and you have to convert it into ammeter. Convert this galvanometer जिसकी resistance है 10 ohm, जिसकी full scale deflection current है 5 milliampere, आपको इसको ammeter में convert करना है. और जो ammeter में आपको convert करना है, तो ammeter का जो range है 0 to, let's suppose 0 to 5 ampere. इसको इस रेंज वाले एमीटर, यानी एमीटर का रेंज जो होना चाहिए वो 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर तक मेजर करना चाहिए. तो how much resistance of shunt is required? So we know that we can convert it into ammeter by connecting a low resistance, that's called shunt. So when we parallel to it, so we have to calculate the resistance of that shunt. We know अभी हमने निकाला था S is equal to Ig G divided by I minus Ig. So here I is equal to 5. That's maximum current 5 ampere. So here S is equal to Ig. That's 5 milliampere. 5 into 10 power minus 3 ampere. Or G had 10 ohm divided by I had 5 ampere minus 5 milliampere. That's 5 into 10 power minus 3. तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. So S is equal to, इसमें से 5 into 10 power minus 2, 5 into 10 power minus 2, 5 minus 5, 5 common, 1 minus 10 power minus 3, 5 and 5 cancel. S is equal to 10 power minus 2. 10 power minus 2 divided by, that's 1 minus 1 divided by 10 raised to power 3. So S is equal to 10 power minus 2 divided by 10 power minus 3, यानी 1000, 10 power minus 3 minus 1 divided by 10 power 3. तो ये आएगा
S is equal to 10 power minus 2 999 into 10 power 3 में से तो 10 S is equal 10 divided by 999। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे